What's up everyone, I hope you all are doing good. So I am starting a new Profam review series, and the most important part of this review series is this one thing, which is I'm gonna talk about positive, negative and every single thing which you need to follow in order to get funded in that particular Profam and in order to take payout from that particular Profam in just 12 to max 15 minutes. Because तुम लोग मेरे से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के बारे में पूछते हो जिनका कभी मैंने नाम भी नहीं सुना। इसको भी एक बार साइड रखते हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम के रिव्यूज़ ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, बट कुछ रिव्यूज़ ऐसे हैं जिनमें आधी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, एंड कुछ रिव्यूज़ ऐसे हैं जिनकी वीडियोस इतनी बड़ी हैं, लाइक 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट की वीडियोज़ हैं, एंड कोई भी ना 50 मिनट की वीडियो देखता नहीं है। नाउ द गाय हु हैज़ मेड 50 मिनट वीडियो, ही हैज़ गिवन यू एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन, बट वो 50 मिनट की वीडियो में ना तुम कोई 2 मिनट का पार्ट स्किप कर दोगे, एंड वो 2 मिनट का पार्ट ही इतना इंपॉर्टेंट होगा जिससे तुम एक पे आउट ले सकते थे प्रॉफिट में, बट तुमने जस्ट बिकॉज वो पार्ट स्किप कर दिया, तुमको उस रूल के बारे में पता नहीं है। यू विल मेक द प्रॉफिट बट यू वोंट गेट द पे आउट बिकॉज यू ब्रीच दैट पर्टिकुलर रूल। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस सीरीज इज 12 से 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आई सजेस्ट यू कि अगर प्रॉफर्म में ना इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो तुमको कौन सा अकाउंट लेना चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन अदर पीपल एक्सपीरियंस, एंड उस पर्टिकुलर अकाउंट टाइप के क्या ऐसे रूल्स हैं जिसको तुम फॉलो करोगे तो तुमको फंडेड होने से उस पर्टिकुलर प्रॉफर्म में कोई नहीं रोक सकता, एंड देन क्या ऐसे रूल हैं फंडेड स्टेज में जिसको तुम फॉलो करोगे तो तुमको पे आउट देने से प्रॉफर्म भी नहीं रोक सकती। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज विद द फर्स्ट वीडियो, एंड जो पहली प्रॉफर्म का मैं रिव्यू करने वाला हूँ दैट इज फंडेड स्क्वाड। नाउ व्हाई आई एक्सपेक्ट फंडेड स्क्वाड फॉर द फर्स्ट प्रॉफर्म रिव्यू, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम रूल फॉलो कर रहे हो या नहीं, एंड तुमको रूल्स पता है या नहीं पता उस प्रॉफर्म के बारे में। बिकॉज इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, मैंने वहाँ पे जब मैं फंडेड हुआ था ना फंडेड स्क्वाड में, आई हैव मेड अ वीडियो एंड इन दैट वीडियो आई हैव सेड दिस थिंग कि मैंने 4 या 5 अकाउंट ब्रीच करे जब जाके मैं फंडेड हुआ, एंड 4 या 5 अकाउंट ब्रीच करने का रीज़न ये था कि मेरे को रूल्स ही नहीं पता थे प्रॉफर्म के। आई परचेज 2 स्टेप प्रो अकाउंट, एंड 2 स्टेप प्रो अकाउंट में चैलेंज फेज में कोई कंसिस्टेंसी रूल है ही नहीं। दे हैव वेरी क्लियरली मेंशन ऑन देयर वेबसाइट दैट 45% कंसिस्टेंसी रूल इज देयर इन द फंडेड स्टेज, एंड मैंने ढंग से रूल पढ़े नहीं थे। सो आई वॉज ट्रेडिंग कि 45% कंसिस्टेंसी रूल फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में है, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड कर रहा था, एंड उसके चलते मेरे मल्टीपल अकाउंट ब्रीच हुए। देन फाइनली जब मेरा आई गेस 4th या 5th अकाउंट था जो मैंने पास करा, देन आई वाज लाइक देन एक बार ना वापस से FAQ खोल के सारे रूल्स पढ़ लेता हूँ सो दैट पे आउट रिजेक्ट ना हो। देन आई सॉ दिस थिंग कि भाई जो मैंने चैलेंज फेज में अराउंड $1200 to $1500 वेस्ट करे ना, दैट इज समथिंग जो मैं वेस्ट नहीं करता अगर मेरे को ये चीज़ पता होती दैट देयर वॉज नो 45% कंसिस्टेंसी रूल, एंड दैट इज द रीजन वाई आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज विद द फंडेड स्क्वाड वीडियो, बिकॉज रूल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तुम किसी प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हो ना, तुमको उसके चैलेंज फेज के रूल्स, उसके फंडेड फेज के रूल्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ आई परचेज फंडेड स्क्वाड चैलेंज इन आई गेस मार्च एंड और इन अप्रैल, एंड माई गोल विद दिस फंडेड स्क्वाड अकाउंट वॉज वेरी सिंपल कि भाई इससे मेरा जो भी पे आउट आएगा ना, आई एम गोना स्पेंड एवरी सिंगल पेनी इन दुबई। So till now I have taken 2 payout. One payout is of $2,040 and another payout is of around $2,080. So in total I have bid on around $4,100 from Funded Squad, and उसमें से तो मेरा अराउंड स्टार्टिंग में $1,200 to $1,500 का चैलेंज फीस ही थी, सो आई रिकवर्ड दैट, एंड जो चैलेंज फीस को हटाने के बाद जो मेरा प्रॉफिट है दैट इज अराउंड 25 or 2600 इज माई प्रॉफिट एज ऑफ नाउ, एंड माई अकाउंट इज अगेन अप $2,686. सो आफ्टर स्प्लिट माई प्रॉफिट विल बी अराउंड $2,200. आई एम गोना शो यू एवरी सिंगल थिंग. द प्रॉफिट स्प्लिट इन फंडेड स्क्वाड इज 85%, so I'm gonna show every single thing to you. Now the next payout is on 22nd of July, and in total I'll be having $4,500 something dollar, and then एक दो पे आउट और किसी दूसरे प्रॉफर्म से मिला के I'm gonna spend every single money living a lavish and a good life in Dubai for at least 7 to 10 days, because इतना पे आउट बनाना तो ठीक है बट उस पे आउट को स्पेंड करना एंड वो एक्सपीरियंस लेना दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट पे आउट मनी इन गेटिंग द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ, दैट पे आउट मीन्स नथिंग, एंड आई एम नॉट गोना डू दिस वन थिंग कि भाई पहले दिन जाके मैं दुबई में पहले दिन या 2 दिन में जाके दुबई में एक 5 स्टार होटल में रूम बुक करके रह लिया, देन आई एम गोना पोस्ट द सेम स्टोरी, एंड देन बाकी मैं जाके किसी सस्ते से होटल में रह रहा हूँ विच कॉस्ट अराउंड 1,500-2,000 रुपीज़. So I'm not gonna do that thing. It makes no sense of working this hard and earning money जिससे इतना stress होता है that even my hairline is going back. So if I am doing sacrifices that I'm gonna spend all my money
in getting the best experience. So that's it. Now, without wasting any time, let me show you the dashboard and the Funded Squad website, and let me tell you the rules which you have to follow and which account type you should go ahead with. So this is the Funded Squad website. As I told you, I have made $2,686, which you can clearly see. Now my next payout request date is on 22nd of July, and my payout amount is $2283. So I have already made around, the graph is like this only. Never the graph goes like this, higher high, higher low. It's always like this, but this graph is pretty good because I was very clear here that I'm gonna make $2,500, $3,000, or max $4,000 in this particular account, and then I'm gonna request the payout. Whenever I aim for bigger amounts, I usually made fuck ups, and I either breached the account or I either lost all the profit which I made. And this happened with me recently as well, जिसके बारे में next video में बात करूँगा. This is the details. So this account started on 25th of May, and the profit split at 85%, consistency is 23%. I have to maintain 45% consistency with 0.5% of profitable days, 3 profitable days of 0.5% in order to receive the payout. And you can see 25, 26, 27 of June, I made more than $500, which means I have 3 0.5% profitable days, and I am eligible for requesting the payout. Now here you can see the payout requested is 22nd of July, and the payout amount is $2283 after 83% split. Now this is the Funded Squad website, and they have currently 50% offer running on one step and two step account, and 25% on instant funding. And with this 50% code and 25% code, I remember one more thing, that after making 2 payout and again up around 2.6% on my live funded account, the CEO of Funded Squad, Mr. Ajwad, reached out to me for a podcast, and I was like, definitely bro, let's do a podcast. And he gave me 5 account of 10k for the giveaway. And if you want to participate in the Funded Squad giveaway of 5 10k accounts, all you have to do is find the link of Twitter post where I have hosted the giveaway and do all the steps in order to participate in the giveaway. And I'll pick 5 winner for 10k accounts on YouTube live this weekend. And also he gave me a 50% off code, which if you want to go ahead with a Funded Squad account, you can definitely use that. It's MSR50. And there is this 25% off code for the instant funded account, which is MSR25, but I usually don't suggest that you should go for instant funded account. So go with 2-step or 2-step pro account, which I'm going to talk about now. As you can see, this is the website of Funded Squad, and the Trustpilot reviews are 4.8 out of 5, and they have totally given $254,000 in payout, and they have as of now 5188 active traders on their platform. So they have this instant funding model, and whether it's Funded Squad or whether it's instant funding or any other platform, I don't usually suggest you to go for instant funded account. So I won't suggest you this as well, because instant funded account is not a good account type to go with as per my suggestion. So go with a 2-step account and 2-step pro account, which is always better, and there you will get 50% off as well if you use the code MSR50. Now in the 1-step account, so instant funded account, I'm not going to talk about because I don't suggest it, and I don't even read the rules of instant funded account of any prop firm. The 1-step account, they have pretty good 1-step account, but they have this trailing drawdown in this 1-step account. So if you are good with the trailing drawdown, then you can go with this. But my favorite and the one account type which I go ahead with was 2-step pro account. So 2-step account, which is this one, where you have to make 6% in phase 1 and then 6% in phase 2, is also pretty good account. And this 2-step pro account, where you have to make 9% in phase 1 and then 6% is in phase 2, is also a good account. If you want, you can go ahead with any of the account type, either 2-step pro or either 2-step. Instant funding is something which you should avoid, and 1-step account, if you are good with trailing drawdown, you can obviously go ahead with that. But if you ask me, 2-step and 2-step pro account are the account type you should go ahead with. Now the reason why I go ahead with 2-step pro account is very simple, because they have the maximum drawdown limit of 10%, while in 2-step account the maximum drawdown limit is 8%.
Now, obviously, the profit target in two-step account is also low. That is the reason why they have the lower drawdown limit as well. But all I want is a big drawdown. Like, obviously, a 10% drawdown will always be better. That is the reason I go for this two-step pro account. And this 100k two-step account with 6% in phase 1 and 6% in phase 2 will cost you around 304. And same with this two-step pro. Now, this thing is on you, that whether you want to go ahead with 6% target account with 8% drawdown, or whether you want to go ahead with 9% and 6% target account with 10% drawdown. Based on my suggestion, I suggest you to go for pro account, but two-step account is also pretty good, and 100k is only costing you 300. Now comes the most interesting point of this particular platform. So if we go on the FAQs, and if I go down and if I click on payouts policy, you can see this thing, payout protection. Now what exactly this payout protection means is, for example, you are already up 7 to 8% on your 100k account, and which means you are up around 7,000 to 8,000, and then you breach the account by hitting your daily drawdown limit, which is 4% in your pro account and 3% in your two-step normal account. So for example, you breach the account, but you are still up on your 100k account because you are previously up around 7 to 8%. Then you breach the daily drawdown, which means you come down to around 3 to 4%, but with this payout protection. But exactly this says is that if your account is up, even when you breach the account, then still you will get the payout. Now there is this small thing which is there, that on a two-step pro account, your account needs to be up at least 1% with a consistency of 35% on a 100k account and 25% on a 200k account. And on a two-step account, you have to again need to be up around 1% with 3 profitable days of 0.5% on 100k, and then 4 profitable days of 0.5% on a 200k. So with all these things, if you are up and you breach the account by hitting the daily drawdown limit or because of any other thing, then still you gonna get your payout. This is one of the best thing, because recently what happened was, जो मेरा MCF का account था ना, I have made a video and in that particular account I was up 11,000 and I was trading in that account, and वो account ना मेरा 100k का 14% up चला गया था. I was up 14,000. Then I breached the account, and जब मेरा वो account breach हुआ था ना daily drawdown hit करके, I was still up around 8%, which is I was still having 8,000 in my account, but I lost it all because I hit the daily drawdown limit. But here, if I was trading in the funded squad account and मैंने 14% बनाया होता, then मेरा daily drawdown limit hit हो गया था ना, still जो मेरे 8,000 9,000 बचा था ना, वो मेरे को पेआउट में मिलता. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट फंडेड स्क्वाड. एंड यही चीज को मैंने देख के ना अप्रैल में फंडेड स्क्वाड का अकाउंट परचेज करा था. दिस इज जनरल FAQs which you can see it on your own. This is something which you should see on yourself. एक बार तुमको पूरा आइडिया लग जाए, जब भी तुम किसी प्लेटफॉर्म में ले रहे हो, ये पूरा डिटेल में पढ़ लिया करो. आई एम हियर टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड इन ऑर्डर टू पास द अकाउंट, इन ऑर्डर टू गेट द पे आउट. So this is something which you can read it on yourself. Now this is the what is considered as a trading day. So there is this one thing as well कि यहाँ पे जो रीसेट टाइम है ना, सो दूसरी प्लेटफॉर्म में 3:30 का रीसेट टाइम होता है, बट द रीसेट टाइम हेयर इज 5:30 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. अगर तुमने रात को 1:30 बजे ट्रेड ले रखा है, दैट इज़ 1:30 AM तुमने ट्रेड ले रखा है, तुमने क्लोज कर दिया एंड तुम्हारा अकाउंट अप्रॉक्स 3.5% डॉट ऑन में चल रहा है, एंड देन 3:30 मार्केट ओपन होते ही अगर तुमने एक और ट्रेड ले दिया, तुम्हारा 1% लॉस हुआ, देन यू क्रॉस 4% लिमिट एंड तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा. बिकॉज जो यहाँ पे रीसेट टाइम है ना, दैट इज़ 5:30 AM एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तुमको ये चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड द होल पॉइंट ऑफ मी मेकिंग द वीडियो इज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं तुमको वो बताऊँ जिसको फॉलो करके तुमको पे आउट मिले, जिसको फॉलो करके तुम अकाउंट पास कर सको ईजिली. एंड जो बाकी FAQs हैं वो तो तुम खुद पढ़ ही लोगे यार, बट दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ. नाउ आई सजेस्ट यू 2 अकाउंट टाइप विच यू शुड गो ahead with: 2-step and 2-step pro. 1-step is good if you are okay with the trailing drawdown, but trailing drawdown is something which is difficult. That is the reason why I'm suggesting you 2-step or 2-step pro. Now if we click on the 2-step account, here you can see all the rules
where you have to make 6% in phase 1 and then 6% again in phase 2 with the daily drawdown limit of 3% and overall drawdown limit of 8% in both the phases, and then funded होने के बाद भी it remains the same 3% in 3% daily drawdown and 8% overall drawdown. And in all the phases you need 3 profitable days of 0.5%, and once you follow all these things you're gonna get your funded account and you're gonna get your payout as well. Simple, very clean, nothing you have to worry about in this two-step account. This is the reason why I'm suggesting you two-step or two-step pro. Now here the profit split is 85% to 90%. 90% I guess add-on mein hoga, but it's 85%. Now the leverage and all these things which you can see it yourself, and I'm gonna get the refund as well on my third payout, because जो मेरा 22nd July को जो payout आने वाला है, that is my third payout. And if we go on the two-step pro account again, if you see it is very clearly mentioned, and यहाँ मैंने इसको पढ़ा ही नहीं था ढंग से, that 45% rule applies to funded accounts only. You see it is clearly mentioned, and that is the reason why it is very important to read every single rule. And this rule applies to funded stage only, and apart from that in phase 1 you just have to again do 3 minimum profitable days of 0.5% with 4% daily drawdown and 10% overall drawdown. And phase 1 में तुमको बना 9%, and then phase 2 में you have to make 6% again with 3 profitable days of 0.5%. And then once you get funded, it's similar to that of two-step account where you have to make 0.5% profitable days, 3 profitable days of 0.5% basically. Plus there is this one thing which added in this two-step pro account, which is you have to maintain 45% consistency in funded account only. That's it. This is something which is very clear, and they don't have any other rule which you need to be very careful about. Whatever they have, I have clearly told you about that thing. There are 3 or 4 rules which are different for one-step account and instant funded account, but as I told you, I don't suggest you to go ahead with instant funded account. Two-step and two-step pro accounts are pretty solid account type with almost no rules. The profitable day rule and the consistency rule which is there in the funded stage is something which is very easily achievable and which is there in almost all the prop firms, and the price is also pretty good. So yeah, all in all, pretty solid prop firm. I have taken 2 payouts. Then there is this giveaway for you as well. You are getting free accounts. I have purchased all the account by myself, and finally after taking 2 payouts and again after making 2.6% on my funded account, I get an opportunity where I can host giveaway for you all for free accounts. And if you want to try funded spot, then you can obviously use the code MSR50 if you want to go ahead with two-step and two-step pro account. And that's all for this video. See you in the next video. Comment में बताओ next review तुमको किस प्रोफॉर्म का चाहिए. I know 12 से 15 मिनट का टाइम था, बट ये थोड़ा एक्सीड हो गया बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रिव्यू, एंड इसमें थोड़ा मेरा स्टोरी भी था कि मैंने क्या मिस्टेक करी जिसकी वजह से मैं ये सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ. बिकॉज ये सीरीज मेरे को मार्च या अप्रैल में स्टार्ट करनी थी, बट आई वॉज बिजी विद पे आउट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. देन फाइनली आई स्टार्टेड, एंड देयर वॉज दिस बैक स्टोरी जो मैं तुमको बता रहा था, जिसकी वजह से मेरे भी इतने अकाउंट ब्रीच हुए एंड इतना सब कुछ हुआ. That is the reason ये थोड़ी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई. But going ahead, I'll try to keep almost all the videos in the duration of 12 to 15 minutes. So comment में बताओ next video तुमको किसके ऊपर चाहिए, and make sure you hit the like button and make sure you hit the subscribe button, and see you in the next video. Tada, bye bye.